For 6 months, I was in a acting school with Neeraj Pandey and Anupam Kher. Oh, You're offering something new to them, something different to them. That's what I Maybe want Kirari to do. 786 is not that they're No, but looking that for. also has to continue. I cannot go away from that also. That is part of me. The way you are looking at first promo itself, there's something new. खरे से भी ज़्यादा उतरेंगे, ज़्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत तो मैं क्या बोलूं, मतलब मैं बोलूं मैंने फाड़ दिया है, मैंने तोड़ दिया है, आप स्क्रीन में घुस के अंदर आ जाओगे, बिल्कुल बोलना सीटें चाहिए, फाड़ दोगे, आपको रुइयां बोलना उड़ाओगे। चाहिए। देखो अक्षय जब अच्छा काम करो ना तो डंके की चोट पे बिल्कुल सही बात। एक डायलॉग आपका इसमें प्रोमो में he है। has crossed everything that is true in his body right now. लाइफ में बीप बीप कभी किसी से डरना मत। मैं कहूँ ये कुर्सी उठा के पटक दूं, मैं इन्हीं के प्रोग्राम पे कुर्सी उखाड़ लूंगा या फाड़ दूंगा जब नेशनल अवार्ड आ जाएगा। चलो चलिए, ठीक है, ठीक है, चलो। खत्म हो गई बात। इश्क आशिकी में कुछ लोग छांटता है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम खेर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। मुई जवानी सड़कें नापी, मुआ जमाना आधा पापी, कौन ओरिजिनल सब कुछ कॉपी, मोई जिंदगी आपा धापी. Well, these are the lines from Dharpakad, a song from Special 26, and I think it sums up the basic idea of the film as well. And we have huge honor to have Anupam Kher and Akshay Kumar, the lead pair of the film. Wonderful to have you guys on Bollywood Hangama. बहुत बहुत शुक्रिया, thank you. And I think these 4 lines sum up the film as well. In a way, fake is real. Yeah, it does, I mean, say, but the fun part is you actually won't, even the promos doesn't actually show us who's the real, who's the fake in this. Right. And that's the best part about the screenplay of Neeraj Pandey. Like, I still remember watching his 3 years back, watching his Wednesday, and doing so many films after that also. While watching it, you actually, while watching any film, you can come to know what is going to be next, because me being a part of the industry, you can. But that film, I couldn't guess it. Same goes with this film also. While reading the script, I couldn't visualize what is going to happen next. And that's the fun part of it. That's the USP of his filmmaking. अलमारी की चाबी दीजिए। चाबी खो गई है नहीं। ताला तोड़ो। मंत्री जी की तनख्वाह। कोई बाहर नहीं निकलेगा। He's worked in both his films, so he can put more light So on it. I think we would like to tell our audiences that we even don't know who is fake and who is real. There's one of your lines that you say that 1 मिनट के लिए तो मैं भी भूल गया था कि हम चोर हैं. ये फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। 1 मिनट के लिए तो मैं भी भूल गया था कि हम चोर हैं। इट्स अ टंग एंड चीक फिल्म। मैं इस फिल्म की तुलना हमेशा टॉम एंड जेरी के साथ करता हूँ। लोग आई वुड लाइक टू से दैट वी आर जेरीज, and the people who are watching Tom and Jerry, they feel very thrilled when Jerry's upstage Toms. But in this film, you do not know who is what till the last minute. But sometimes even Jerry, he gets caught and Tom is Occasionally. higher. Yeah. And then suddenly Jerry goes up. And there are a lot of times when Jerry loses and Yes. the whole cartoon just gets over. Oh, that's right. Right. So it's a film which people will sit on their edge of their seat and still have a smile. Smile because something they are being respected as an audience, and also it's greatly entertaining. And I'm not saying because Akshay is sitting here, but I think Akshay lends a kind of a credibility to the film in terms of being a huge star that he is. He does bring in his own stardom to the film. And having said that, what he does is that he does not be part of this film as a star. He reinvents himself as an actor, which was the best part of this film, that we worked together as a team, because I think Akshay did understand in the beginning that what he is, that is going to be there, but what he adds to the project, Special 26, will be a bonus. So thank you. So let me add to it, like I say, for me, this film, I did it in 6 months, and for 6 months I was in a acting school with Neeraj Pandey and Anupam Kher. Oh, It's like there's a mutual admiration society that you guys are having these days. But that is the magic of good It's work. not basically what the mutual admiration is just because you're asking a question and that's how we decide. But for me, it was actually the fact that I'm doing a film with him. I've done many films with him, but I've never said that way. I did recently Desi Boys with him. Yeah. And I didn't come up with like, I'm say, Are, maine bahut kuch seekha. Because that film was not about learning. That film was like how I always go. So here I get a chance to rediscover myself, to go into it and try and learn so many things which have been missing
which I have not seen it. And none other than, let me say, a man who's running such a huge school of acting today. Also, I think we spent a lot of time, quality time together. So we are, that is after a long time. Earlier when we did films, तो हमारे कोई 2 दिन का काम, फिर 7 दिन का काम, 3 ये हम ऐसे कोई फ्रेम ही नहीं था जिसमें मैं इनके unless पूरे 32 दिन किए शूटिंग. The only time I was leaving him alone was when he was romancing with the girl, Right. with Kajal. But otherwise, so we discovered each other as people also. Apart from that, the magic of good cinema is that you can keep on talking about it and you still have lot many stories to tell. As an Akshay Kumar fan, I'm excited. I'm looking forward to Special Chabbe. You will I be can't say thrilled. about Khiladi 786, but I'm surely looking forward to this movie because the way you are looking at first promo itself, there's something new. हमने इस तरीके से पहले आपको देखा नहीं है. We've not seen you like this before. चलिए फिर हो सके, मतलब आई होप मैं खरा उतरूं आपके, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे. नहीं, बहुत खरे से भी ज्यादा उतरेंगे, ज्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं तो है. मैं क्या बोलूं, मतलब मैं बोलूं मैंने फाड़ दिया है, मैंने तोड़ दिया, आप स्क्रीन में घुस के अंदर आ जाओगे, बिल्कुल बोलना सीटें चाहिए, फाड़ दोगे, of रुइयां course बोलना उड़ाओगे. चाहिए. देखो अक्षय, जब अच्छा काम करो ना तो डंके की चोट पे बिल्कुल सही बात. बिल्कुल सही बात. बिल्कुल, ये मैं आपको बोलता हूँ. प्लीज मेरी बात मानो. आप बुरा काम करो तो लेट पीपल से, उसमें फिर निकल जाओ. बट अच्छा काम करो तो डंके की चोट पे. देखो क्या होता है, 8 February 2013, one of the finest films of next year will be releasing. That is Special 26. Let me just say that to you. I think it looks like that. कौन हो आप? लाइफ में ना बहनचोद कभी किसी से डरना मत. इनफैक्ट आपने एक डायलॉग आपका इसमें प्रोमो में He है. has crossed everything that is true in his body right now. लाइफ में बीप बीप कभी किसी से डरना मत. यू नो एक डायलॉग में कभी किसी से डरना हाँ, लाइफ में बीप बीप कभी किसी से डरना मत. मतलब सही कह रहे हो. आई थिंक ही इज राइट. आपको खुल के कहना चाहिए. देखिए, हर इंसान अपनी अपनी उसकी फितरत होती है. आपकी फितरत अलग है, इनकी अलग है, मेरी अलग है, आपके कैमरामैनों की अलग है. हर इंसान जो करता है, कोई डंके की चोट पे कह सकता है, कोई उससे बढ़ के कहता है, कोई नीचे से कहता है, कोई अंडर प्ले करता है. हर एक की एक फितरत होती है. तो मेरी फितरत ऐसी है कि मैंने आज तक आपका दिल क्या कहता है अक्षय जी, बताइए. देखिए, इस picture के बारे में. मैंने फिल्म देखी है, जितनी कुछ देखी है मुझे अच्छी लगी. अच्छा. लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं कहूँ ये कुर्सी उठा के पटक दूँ, मैं तो इस पिक्चर के इसके सर पे मार दूँ एक दो बताइए, मैं आज आप इनकी तरफ से पूछता हूँ, बॉलीवुड हंगामा की बिल्कुल, तरफ से बिल्कुल, पूछता हूँ, इस पिक्चर के किस स्टेज पर रिलीज होने के बाद आप कुर्सी उठा के फेंकने वाले हैं? कुर्सी उखाड़ा मैंने आज तक इतनी नहीं, कब उखाड़ेंगे? मैं जब वही तो बोला, मैं आपको मुझे नेशनल अवार्ड मिलेगा, या जब आप पिक्चर 25 हफ्ते बहुत चल valid question जाएगी, है. या बहुत कमाएगी, किस स्टेज पर आप कहेंगे चले मैंने आज बोल दूंगा, मैं इन्हीं के प्रोग्राम पे कुर्सी उखाड़ लूंगा या फाड़ दूंगा जब नेशनल अवार्ड आ जाएगा. चलो चलिए, ठीक है, ठीक है, चलो। खत्म हो गई बात. We've got an interview now confirmed with Akshay Kumar whenever he is winning a national award. He should. It's fantastic. I know that. I think he has a point by saying that everybody has a way of expressing. But I, being his co-actor and an actor who has seen his graph, I think he deserves the highest recognition as an actor. क्या बात है, क्या बात है. मुझ में तू ही तू बसा नैनों में जैसे ख्वाब सा. Finally, Akshay, could you please sing 2 lines from मुझ में तो if possible? पैसे नहीं देते तुम उसके गाने के? गा दो यार. No, he's a very It's a great sport. Bollywood hangama loyalist actually, so. पेश किया जाए. ओम नमः शिवाय. इश्क आशिकी में कुछ लोग छांटता है, जख्म बांटता है.